This summit, we have seen very impressive participation from the global Buddhist community. And today, I'm equally delighted that such a high level of representation and also participation in this global Buddhist summit. And the theme is extremely relevant. The collective wisdom, united voice, and mutual coexistence. In this great occasion, from my side, and Government of India is extremely fortunate to have such a wonderful gathering and to discuss on such critical concept. Today we are witnessing extremely challenging environment, and I feel as a Buddha Dharma follower, we have a certain duty to contribute. Buddha Dharma is not only for individual peace, but it is for the global peace. So, we have a huge responsibility to discharge our duty as a follower of Buddha Dharma. And when I say Buddha Dharma, I don't really mean those who call themselves Buddhist, because I feel that Buddha Dharma is universal. It is not those who proclaim to be Buddhist practitioners. Buddha Dharma is a universal concept where everybody can be Buddha Dharma follower. So whether you are traditional Buddhist or non-Buddhist, I don't differentiate between a Buddhist and non-Buddhist. I feel anybody who believes in the concept of universal peace and harmony is a Buddha Dharma follower. We are witnessing political difficulties all around the globe. There are so much of social unrest, environmental challenges, how to overcome. And if you see the Buddha Dharma guidance, which is through compassion, wisdom, and the harmony, the result will immediately be seen. I have personally felt that it is always collective wisdom which can meet all the challenges. The teaching of Lord Buddha, if you see closely, the principle of Patika Samuppada, the dependent origination, we all are dependent to each other. Nothing is in isolation. If I do something, it has a consequence, it has an effect. So that means I cannot proclaim that whatever I want to do, it is for myself. It has a consequence. So we are all interdependent. Today, if a country is adopting certain policy, it has a consequential effect on another country, all the countries surrounding. So what I believe, when Prime Minister Narendra Modi said in 2014 that if any global leader or any country aspire to dominate, aspire to become powerful nation, become a leader, he must follow Buddha's path. If you follow Buddha's path,
then you will always spread positive things around. Otherwise, in the quest to acquire power, you are actually damaging the surroundings. Some of the global leaders in today's time, they talk about military power, economic power, authorities. But then it is, I think, of no use if you acquire authorities and powers by subjugating others, by causing pain to other people. So, if you follow Buddha's middle path, then you will become powerful. You may become more prosperous. But in the process, you will make others happy and others prosperous too. So it is so relevant in today's interdependent political concept that we must aspire to rise, but we must follow the concept that we rise together. Nothing is an isolation. So, not only through the Buddhist Sanghas, all the venerable, the Buddhist Sanghas, they teach us, they guide us. They show us the path, how to follow Buddha's path. But beyond that, we also have our individual responsibilities through dialogue, ethical engagement, and mutual support to each other. So that is why I have quoted the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, when he said, India also aspired to become very prosperous, a very powerful nation. But that doesn't mean that we rise in isolation. If we remember the history when the Buddhism spread beyond India, it did not conquer through guns and swords and violence. Buddha sent a message, and all the Buddha's followers, right from Ashoka the Great, when the Buddha's message was sent across the different parts of the world, it was through peace, love, compassion. So the Buddha Dharma doesn't conquer by force. It conquers by love. So I don't really discriminate or differentiate between Buddhists and non-Buddhists. In a strict sense, Buddha Dharma is a perfect way of life. Ever since, from childhood, I have listened to great dharmas like His Holiness the Dalai Lama, many dharma gurus. I feel that Buddha Dharma is not about only those who follow Buddhism or those who say they are Buddhists. It's for everybody. So there is complete inclusivity in the approach. There is no place in Buddhist place of worship or anything which excludes other people. Everybody is welcome. It's very embracing. Many times I learn from the Buddha Dharma gurus, almost whether it's Mahayana or Theravada, Mahayana, Hinayan, Theravada, Vajrayan, the whole concept, I feel there is a strong convergence on it. In the 2 days, this conference, we will get to listen to great ideas and thoughts of different scholars, and mainly from the Sangha leaders. So I will not throw much light on what I think, but I am here actually to listen to the much more experienced, learned, and much more authorized people to speak on Buddha Dharma. I just want to tell a few words to my fellow Indians. हम लोग तो भारत के लोग हैं, भारत वर्ष के लोग हैं. यहाँ
इस बुद्ध धर्म का ग्लोबल समिट देश विदेश से लोग आए हैं। हमारे कई जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि हम लोग उस भूमि से हैं जहां से बुद्ध धर्म का जन्म हुआ और यहां से विश्व भर में बुद्ध धर्म फैलाया गया है। तो इस भारत भूमि का नागरिक होने के नाते हमारा विशेष दायित्व है। कभी कभी हम खुद ही नहीं समझते हैं कि हम कितना पवित्र धरती में जन्मे हैं। लोग इस धरती को चूमने के लिए आते हैं। मैंने कई लाखों लोगों से विदेश में जो बौद्ध है या बुद्ध धर्म को जो मानते हैं या उसको सम्मान देते हैं, उन लोगों से मैंने सुना है कि जीवन काल में भारतवर्ष एक बार जाना है और उस धरती को चूमना है जिस धरती ने बुद्ध धर्म को जन्म दिया है। और हम लोग अपने जिम्मेदारी को कितने तो हम लोगों ने संभाला है। बुद्ध का धरती में बुद्ध का ज्ञान और बुद्ध का संदेश को हमने कितना फैलाने का काम किया है। भारतवर्ष में जहां जहां बुद्ध धर्म का चिन्ह है, बोध गया से लेकर के सारनाथ, कुशीनगर से लेकर के जितने भी देश भर में बुद्ध धर्म का चिन्ह है, वहां पर हमने किस तरीके से विश्व के लोगों को आने के लिए और महसूस करने के लिए अपने तरीके से हमने कार्य किए हैं, ये सोचना होगा। 2014 से पहले अपने तरीके से हम लोग बुद्ध जयंती, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। भारत सरकार की ओर से कोई इस तरह का कार्यक्रम तक नहीं बनाया था। पहले बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा को मनाने का एक सामूहिक भारत सरकार के नेतृत्व में शुरू किया। इसलिए मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को तारीफ करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आईबीसी का देख रेख में कई कार्यक्रम 2014 के बाद शुरू किए हैं। आज कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी यहां है। इनके नेतृत्व में पिछले 1 साल 1.5 साल में मैंने जो देखा है, वो खुद आईबीसी के साथ बैठ करके बुद्ध धर्म का लेकर के जो कार्यक्रम की रचनाएं की है, उससे मैं मानता हूं कि जो भारतीय होने के नाते जो हमको करना चाहिए था, हजारों वर्षों से हमको करते रहना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं छूट गए हैं, वो शुरुआत हुई है। और आईबीसी ने अपना जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से संभाले है। आईबीसी के सेक्रेटरी जनरल, डीजी और पूरा टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी जो मुझे लगता है आप लोगों के पास कार्यक्रम में भी है, जो पिपरवा का बुद्धा रेलिक्स को यहां जो एक्सपोजिशन के लिए रखा है, एग्जीबिशन करके बहुत खूबसूरत रखा है। हमारे विदेश के मेहमानों को शायद ले जाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत से दर्शाया है। वो जब हम देखते हैं तो हम वो सफर, हजारों वर्षों से जो हमने सफर किए हैं, उसका झलक वहां दिखाई देता है। फिर हम महसूस करते हैं कि हम कितना धन्य लोग हैं कि हम इस धरती में पैदा हुए हैं। इसलिए एक भारतीय होने के नाते जब इस तरह का बैठक होते हैं तो देश विदेश से लोग बुद्ध धर्म को समर्पित भाव के साथ भारत देश आता है, तो हमारा विशेष दायित्व बनता है कि इनका देखभाल तो करना ही है, लेकिन इनके मन में बुद्ध धर्म को लेकर के जो आस्था है, उसको और आगे ले जाना में और फैलाने में हम एक भारतीय होने के नाते हमको क्या करना चाहिए, उसका जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और आज ये ग्लोबल समिट हुए हैं, इस तरीके के और भी कई कार्यक्रम हमने देखा है। कई वर्षों पहले जो नहीं दिखाई देता, अब हमने देखा है। यहां बुद्ध का जो अवशेष लेकर के विदेश जाने का कार्यक्रम पिछले कुछ सालों में जो बहुत अच्छी तरह से योजनाएं की है, उसका प्रभाव मैंने देखा है। मैं खुद मंगोलिया गया, अभी भूटान जाकर आया, मैं वियतनाम में देखा है। हजारों किलोमीटर सड़कों पर लोग लेट जाते हैं इसका दर्शन करने के लिए। पवित्र बुद्ध अवशेषों का दर्शन करने के लिए लोग पूरा
जमीन पे लेट जाते हैं, पूरा आस्था के प्रति पूरा समावी हो जाते हैं। और वो जब देखता है तो हम उस धरती से आए हैं तो हमारे जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए भारत के अंदर में जितने भी लोग हैं, विशेष करके जो हमारा भिक्षुगण है, जितना भी हमारे बुद्ध धर्म का रक्षक है, उनके साथ तालमेल करके हमको कई काम आगे करना है। आज के पवित्र दिवस पर जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा कहने का नहीं है, लेकिन बहुत मन में इशू है, लेकिन इतना लंबा मुझे अपना विचार को यहां रखने का मैं औचित नहीं मानता हूं, क्योंकि हमको सुनने का है और 2 दिनों में बहुत कुछ आगे का रास्ता भी हमको देखने को मिलेंगे। माई ओनली appeal to all the venerable Buddhist scholars, the Buddhist leaders, the monks and the nuns, is to think about the convergence of different sects of Buddha's teachings. We really need to synergize how to move together. If you critically view all the paths, different sects of Buddhism, it's all same. But we need to conveniently put it together. And as His Holiness Dalai Lama rightly said, the ancient wisdom must be merged with the science, which is practical in our way of life. How to do it? It can be done in such gathering. When you have a special session, you can think about it, you can talk about it, and also bring all the different methodology which we have adopted into one form. It is a huge task, but we have to do it. And then the whole global community, we must come together. Whether you are Buddhist or non-Buddhist, we have to come together. The world is heading towards huge conflict, challenges. I think the best solution is to come together with this collective vision and the idea which is given here, united voice, and also the mutual coexistence. We have to coexist. We cannot live in isolation. And that is what Lord Buddha has told us, that we have to coexist harmoniously, spread love and compassion. That is the teaching of Lord Buddha. And in the Global Buddhist Summit, the greatest message will be the teachings of Lord Buddha is ever more relevant today than what it has been in the past. So that is the purpose for which we have gathered here, and I'm thankful to the IBC for inviting me to share this inaugural session. And I may not be taking part in all the technical important sessions, but I will definitely go through all the recommendations and also find out what those valuable discussions and ideas which you would be sharing in the sessions. Thank you so much. Namo Buddhaya. We are grateful to Honorable Sheikh Kiren Rijiju for gracing the occasion as well as for his inspiring words. Thank you very much, Honorable Minister, sir. Ladies and gentlemen, for this Global Buddhist Summit, we have